In this video, we will discuss about the solution of linear differential equation by changing the independent variable x into z. So this is the third method for solving the second order differential equation. To solve linear differential equation by changing, we write down changing independent variable, independent variable x to z. So let the differential equation of second order be d2y over dx square plus p dy by dx plus q y is equal to r. So this is the second order differential equation. So same, we check coefficient of d2y over dx square should be 1. If it is not 1, we make 1 by dividing. Then we decide p, q, and r. So after making 1, we decide the p, q, and r. So now, after deciding p, q, and r, we move to the step 1. So this is the step first. In step first, we take dz upon dx to the whole square is equal to q. So this is our equation number 2. So then dz upon dx is equal to plus minus root q. So here we take a positive sign. So we remember, so we take the positive sign for solving the differential equations. So now when we take the positive sign, so this gives us dz upon dx equal to root q. So when we integrate this, so on integration, that z is equal to integration of root q into dx, root q into dx. So this is our equation number 3 and this is our equation number 4. Now we have some general points you have to remember. These are the notes for solving problem based on this method. नेगेटिव साइन को हमें लीव करना है. नेगेटिव साइन नॉट कंसीडर. सेकंड, this is first point, or second major point is if q, if q having any constant term, q having any constant term which is, जो कि perfect square नहीं है, which is not a perfect square, which is not a perfect square, we leave them. उसको भी छोड़ देंगे, उसको भी नहीं कंसीडर करेंगे. और थर्ड पॉइंट क्या होगा हमारा, लेकिन क्यू, तो कंसीडर कंप्लीट फंक्शन ऑफ एक्स फ्रॉम क्यू. मतलब क्यू में से जो एक्स का फंक्शन है वो तो कंप्लीट लेना है, वो चाहे स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बने न बने, कोई भी सिचुएशन हो,
we can take the complete function of x. Now, after understanding these 3 points, we move to the next step. So step number two. Step number two. So then we find P1. P1 is equal to, और P1 के लिए फॉर्मूला होगा डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स टू द होल स्क्वायर. This is our equation number 5. So we have to remember this formula also. Now, on the basis of P1, so if value of P1 is constant, अगर P1 की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है तो ही ये मेथड अप्लीकेबल होगा. So then this method is applicable. Then this method is applicable, otherwise not. तो ये एक रेस्ट्रिक्शन आ गई सेम सेकंड में रिड्यूसिबल टू नॉर्मल फॉर्म, और थर्ड केस के लिए यहाँ P1. तो P1 अगर आपका कांस्टेंट आ रहा है तो ही हम आगे प्रोसेस करेंगे इस मेथड को लेके, अदरवाइज वी स्टॉप दिस. सो नाउ अब एक हिंट है हमारे पास, जैसे कि फॉर कैलकुलेटिंग द P1, फॉर कैलकुलेटिंग P1, तो फॉर P1 तो फर्स्ट वी कैलकुलेट. अब हमें क्या करना होगा, पहले न्यूमरेटर को ही कैलकुलेट कर लेते हैं. फर्स्ट वी कैलकुलेट न्यूमरेटर. न्यूमरेटर क्या है इसका, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स. तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 90% केसेस में तो ये जीरो आ जाएगा. 90% केसेस विल बी जीरो, मतलब न्यूमरेटर ही. तो आपको डिनोमिनेटर से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. तो 90% केसेस में जीरो आ जाएगा ये P1. 10% केसेस होंगे जिसके लिए हमें आगे प्रोसेस करना हो. ओके, so we remember this thing. So now we move to the next step. So that is the step number 3. So for step 3, so we have to find the value of Q1. और Q1 की वैल्यू क्या होगी, Q अपॉन dz upon dx to the whole square. So this is the equation number 6. Now अब यहाँ पर कंप्लीट, जब Q1 Q की जो आपने कंसीडर किया है वो कंप्लीट होगा आपका, तो कंप्लीट Q लेके चलेंगे. नाउ वी मूव टू द स्टेप 4. और स्टेप 4, फाइंड R1. और R1 क्या होगा हमारा, R अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स टू द होल स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 7. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5. अब स्टेप नंबर 5, चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल x to z. So changing independent variable x to z. So equation 1, जो जनरल इक्वेशन 1 reduce to the normal form. तो जो इक्वेशन 1 होगी वो रिड्यूस होके किस फॉर्म में आ जाएगी, तो इक्वेशन 1 विल बी रिड्यूस इनटू द नॉर्मल फॉर्म डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस P1 dy by dz प्लस Q1 y इज इक्वल टू R1. तो ये इक्वेशन हमें रिमेम्बर करनी होगी, याद रखनी होगी. उसके लिए आफ्टर कैलकुलेटिंग द P1 Q1 एंड R1, तो रिड्यूसिंग इनटू द, तो यहाँ पर हमने वेरिएबल चेंज कर दिया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x to z. So now we put the value of P1 Q1 and R1. So as P1 and Q1 are constant, ऑब्वियसली जब आप Q1 कंप्लीट कंसीडर करोगे और dz अपॉन dx का होल स्क्वायर भी आपने Q माना है, ये भी कांस्टेंट आएगा और P1 भी कांस्टेंट आएगा. तो कांस्टेंट, so इक्वेशन नंबर 8 कैन बी सॉल्व इजीली. तो इसको फिर हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे जब कांस्टेंट कोफिशिएंट आ जाएंगे, देन वी कैन सॉल्व इजीली. तो सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF निकालेंगे, और CF
then we calculate the pi, then find pi, or solution y is equal to cf plus pi is the solution. तो सिंपली सॉल्यूशन हो जाएगा, और सॉल्यूशन फाइंड करने से बाद फिर क्या करना होगा, ये किस में आएगा, z में आएगा। तो चेंज टू, तो वी चेंज z टू x, क्योंकि क्वेश्चन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो जनरली हमारा x है, तो x को z में चेंज कर लेंगे, और z में चेंज किसकी हेल्प से कर देंगे, इक्वेशन नंबर, यूजिंग इक्वेशन नंबर 4। 4, तो 4 में हमने z लिखा है ना, इक्वेशन नंबर 4, तो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 4 वी कैन सॉल्व। So this is the method, third method, changing the independent variable. We take one problem based on this, so you can understand the method. So we have one question. Given the differential equation, d square y upon dx square plus 10x dy by dx plus cos square x into y is equal to 0. ओके, अब क्वेश्चन तो हमें सारे इसी फॉर्म में दे रखे होंगे कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, बट वी हैव टू चेक which method is applicable for particular this differential equation. We try to first one, that is by using part of CF is known. Second, reducing to normal form, we calculate the I. First method is not applicable, there is no part of CF is obtained. So then we move to the second method, then we move to the third method. So now we are doing the solution. So we write down the coefficient of d2 by over dx square is 1. So we decide P, Q, and R. So what is P? P is equal to 10x. What is Q? Q is equal to cos square x. And what is R? R is equal to 0. Now we move to the next. So we take the value of dz given. dz upon dx to the whole square is equal to Q. अब Q क्या है हमारा, purely function of x है, तो we can consider completely. So this is Q. So now you can write down as dz upon dx to the whole square is equal to cos square x. So when we calculate the value of dz upon dx, so this gives us cos x. We take the positive sign. So dz upon dx equal to cos x. So when we integrate this, so integrating, so means dz is equal to cos x into dx. So by using separation of variables, so z is equal to sin x. Z equal to sin x. Okay. So we do not use here plus c. So just we change the variable z is equal to sin x. Z equal to sin x. So then we obtain the value of P1. So P1 is equal to d square z upon dx square plus P dz upon dx upon dz upon dx to the whole square. So d, so now we write down d square z, अब differentiate करेंगे, so what is the differentiation of cos x, d square z upon dx square, cos x differentiation is minus sin x, और प्लस p क्या है हमारा 10x, और इनटू dz upon dx क्या है हमारा cos x, और अपॉन ये क्या है हमारा cos स्क्वायर x, तो 10x में sin x अपॉन cos x, तो cos x टू cos x कट जाएगा, माइनस sin x और प्लस sin x क्या हो जाएगा, so this is minus sin x or here is plus sin x or upon cos square x. This gives us 0. तो 90% केसेस हमने बोले कि ना P1 0 आएगा, तो P1 is 0 here. So P1 is 0. Now P1 is 0. So we calculate Q1. और Q1 क्या है हमारा, Q upon dz upon dx का होल स्क्वायर, तो ये तो मैक्सिमम केसेस में 1 ही आएगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x.
दिस इक्वल टू 1, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। और आर तो हमारा दे ही नहीं रखा, आर तो जीरो है, मतलब आर वन निकालेंगे तो आर आर अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स टू द होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, जीरो। सो नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग पी वन क्यू वन आर वन, so we write down changing changing the independent variable x to z, equation 1 reduced to normal form। इक्वेशन वन को रिड्यूस कर देंगे नॉर्मल फॉर्म में, और उसकी नॉर्मल फॉर्म क्या होगी फिर हमारी, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट के साथ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन और डी बाई वाई डी जेड और प्लस क्यू वन इंटू वाई इज इक्वल टू आर वन। So now we put the value of P1, Q1 and R1. So putting the values of P1, Q1 and R1. तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो P1 तो जीरो है ही हमारा, तो दिस विल बी जीरो, जीरो इंटू डी वाई बाई डी जेड, और Q1 कितना है, वन, वन इंटू वाई, और R1 क्या है हमारा, जीरो। तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस इनटू दिस फॉर्म, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। अब आरएचएस पार्ट जीरो है तो केवल सीएफ ही उसका सॉल्यूशन होगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, डी ओवर डी जेड को यहाँ पर डी डिनोट कर दिया, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई इक्वल टू जीरो। सो मेक ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो एम के रूट्स क्या आ जाएंगे हमारे, प्लस माइनस आयोटा। तो प्लस माइनस आयोटा और प्लस माइनस आयोटा के लिए सी एफ कैसे लिखा जाएगा, तो सी एफ वी राइट डाउन एज वाई इज इक्वल टू सी वन कॉस जेड विद अल्फा, रियल पार्ट जीरो है, और C2 साइन जेड। और पी आई तो क्या होगा इसका, पी आई विल बी जीरो। सो पी आई इक्वल टू जीरो बिकॉज आर एस एस पार्ट इज जीरो, तो पी आई इज जीरो। तो जो सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ प्लस पी आई सो मीन C1 cos जेड और प्लस C2 साइन जेड, पी आई जीरो। तो y इक्वल टू C1 cos जेड प्लस C2 साइन जेड। अब सॉल्यूशन, आंसर किस में आना चाहिए हमारा, x में, तो वी चेंज, ओके, सो चेंज z टू x। तो z को x में चेंज करेंगे तो z हमारा क्या सॉल्व हो, क्या आया था, z इक्वल टू साइन x। So z, put the value of z here. So this gives us y is equal to C1 cos sin x or plus C2 sin into sin x. So this is the solution. So this is the solution. This is the required solution of given differential equation. So hope you understand this topic.